Hello everyone and welcome to my class. Now today in this video I'll be starting the second theme of class 12th history, that is kings, farmers and towns, and we'll be covering rough time period from circa 600 BCE to 600 CE. Now this is a very important time period because many developments took place in this in these centuries, right? The main development that was taking place throughout the Indian continent Indian subcontinent at that time was the emergence of new religions, new faiths, new beliefs, right? Not only in India but in other parts of the world also, right? And another important thing is the discovery of iron, which improved the living standards of the people. And this was the time period when complex society developed in India, right? So let's start the topic. Till so far in the previous chapter we have discussed about the Harappan civilization, and we have seen that why Harappan civilization and its sites, different sites, were called the urban centers. There were many important features which makes them the urban center of that time period, right? So let's start the topic. After Harappan civilization, we see the Vedic age or Vedic period in which the Vedas were composed, right? For Harappan civilization, you'll find different time span allotted by historians. Right, their studies are based on radiocarbon dating or on fossil studies or on the objects that they have found from excavation. Means through various methods they have predicted the time period of this civilization. So a rough time period, in some books you'll find 3500 BC, and in some books you'll find 2500 BC to 1500 BCE, right? See the this is just an approximation, or this is just the estimation of the historians, because there is no definite year from where we can say that yes, from this point, this year the civilization started, right? So you'll find different times periods in different books. The most acceptable time period is 2500 BC to 1500 BCE. From 1500 BC to 1000 BC, we find the early Vedic period or early Vedic age, right? This was the time period when Rig Veda was composed, right? Then later Vedic period from 1000 BC to 500 BCE. Other Vedas and other scriptures were composed during this time. Now these scriptures, these Vedas became the base for the Hindu society, Indian society, and it is not only the writing of the Vedas that were taking place, but these scriptures, these Vedas shows the type of society at that time, right? Lots of information can be gathered from these scriptures and Vedas. Now this was the time period when emergence of agricultural settlements we can see in the Indian subcontinent. Now agricultural settlements, more number of agricultural settlements, because iron was discovered and clearing of forest became easy. Iron tools were comparatively far much better than the previous traditional type of tools. Iron, as compared to other metals, is quite strong, quite a heavy material, which can be used for making better tools, which are used in agricultural fields. So clearing of forest was done on a large scale, so that the increased number of population, their demand for food uh, can be meet up, right? So agricultural settlements expanded in India. We also see the megalithic culture in central and south India. Now megalithic culture क्या था? नाम से ही पता चल रहा है, lith means stone. So this was a culture that developed basically in the central and southern region of India, where the people of these settlements, when any person died, they used to dug the land, and dead body was placed there. After covering the grave, what they used to do is they used to keep a huge stone on that, and that grave was surrounded by small rocks from all the side,
Now this was a burial. These kinds of burial were called megalith. Huge mega means huge stone, and lith means stone. Mean are placed on the burial. So this kind of burials are basically found in central and southern India, and that is why the culture historians, they gave this name megalith culture, right? Then sources. Whenever we'll discuss any time period, any civilization, it is very 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 important that we talk about the sources, from where we are getting the information about this time period. This is very important, right? Our knowledge is based on these sources. So sources for this time period, as I told you, burials, inscriptions, text, coins, visual material. Visual material may we include the architectural things, the building structures, all these things, paintings, sculptures, all these things, right? Now talking about the inscription, this word, though we use frequently, but many times I have seen that the students are not clear about inscription. See, anything which is written on any fragile thing like paper, cloth, patta, palm leaf, that is not called inscription. That is just a written source, right? Inscriptions are basically the written text on hard surface, maybe on wall, maybe on metal plate, stone, wooden block. जब हम किसी चीज़ हार्ड सरफेस को शार्प ऑब्जेक्ट से खुरच खुरच कर उभार देते हैं उसमें अक्षर, वो इंस्क्राइब हो जाते हैं उसमें, राइट? उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं, राइट? तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अब इस समय पे देखी जाने लगी लार्ज नंबर पे, और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, राइट? जैसे हम कॉइन्स को स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक. आई हैव नॉट मेंशन बट इट इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक, कॉइन्स के लिए. और एपिग्राफी वर्ड इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, राइट? नाउ this is very important because many times students get confused with the things written on the fragile things like paper, cloth, leaves, but it is not. Inscriptions are written on hard surface, stone, metal plates, rocks, then wooden block, walls, all these things, right? Now your chapters, this is just a basic thing which I am telling you, because throughout this chapter we will be discussing about various inscriptions, the information that we get from these inscriptions, all these things. So this chapter is all about the political setup plus the society plus the economy of the people at that time, because as the name suggests, kings, farmers and towns means this was the time period when farmers were becoming very prominent because agriculture expanded. Then towns were developing, complex society developed, small settlements की जगह बड़े बड़े towns होने लगे थे. And kings के लिए, because this period saw the kingdom thing. पहले क्या था, settlements थी, अब क्या है, छोटे छोटे राजा महाराज उभर रहे थे और उनकी अपनी kingdoms होते थे. So let's start the topic. Your first topic is Prinsep and the Priyadasi. Now Prinsep is a name of James Prinsep is a name of a very prominent name in Indian history, because this person is the credit of deciphering two scripts, two Indian ancient scripts goes to James Prinsep. ये वो व्यक्ति था जिसने इंडिया की दो ऐतिहासिक स्क्रिप्ट्स को पढ़ने का काम किया था, और वो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट. नाउ स्क्रिप्ट जो भी हम बोल रहे हैं, दैट इज़ भाषा, दैट इज़ लैंग्वेज. लेकिन जब हम उस लैंग्वेज को, बोलने वाली लैंग्वेज को लिखित रूप जो उसका होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट. द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट. तो इस व्यक्ति ने, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने दो स्क्रिप्ट्स, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, इंडियन स्क्रिप्ट्स को पढ़ने का काम किया था, डिकोड किया था, समझा था. एक था ब्राह्मी, दूसरा था खरोष्टी.
right? So he brought a revolution in the field of epigraphy in India. He introduced the epigraphy on Indian soil, and this development was taking place in the year in the decade of 1830s, right? And this person, James Prinsep, he was just a member in the minting डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये में काम करते थे, और मिंटिंग डिपार्टमेंट, कॉइन मिंटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे सिक्के बनाने का काम होता है, वहाँ पे काम करते थे। बट ही हैड अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन नोइंग अबाउट द पास्ट। सो ड्यू टू आउट ऑफ हिज इंटरेस्ट व्हाट ही डिड, उन्होंने पुरानी पुरानी जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको पढ़ने की कोशिश की, एंड अल्टीमेटली he gained success in deciphering two scripts, right? Now whatever the inscriptions he found at that time, उनमें एक चीज कॉमन वो पाते थे कि पियादसी, this word पियादसी, which means pleasant to behold, right? इस वर्ड को लेकर उनको ये था कि मे बी पियादसी इज अ पर्सन हु हैड गिवन एन ऑर्डर टू राइट द इंस्क्रिप्शन, मे बी अ रूलर जिसका नाम पियादसी है, कोई ऐसा वेल्दी पर्सन जिसके ऑर्डर पे इंस्क्रिप्शंस लिखी गई होंगी, राइट? बट व्हेन ही टैलीड और व्हेन ही स्टडीड अबाउट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अदर सोर्स, रिटन सोर्स, जब उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा, देन ही कंबाइंड द इंफॉर्मेशन, ही फाउंड द सेम वर्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एज देवनाम पियादसी सम्राट अशोक. This was found in the Buddhist text, and repeatedly this name was there. Then he realized that Piyadasi is just a title. It is actually the Samrat Ashok, and this title is used for him. So then we came to know about King Ashok, right? तब अशोक के बारे में जानने को इंफॉर्मेशन मिली, एंड देन उस फील्ड में और काम होने लगा, और इंस्क्रिप्शंस मिली अशोक द्वारा जो लिखवाई गई होंगी, और फिर उसकी लाइफ के बारे में, उसकी एम्पायर की एक्सटेंट के बारे में हमें पता चला, किस तरह से वो बुद्धिज़्म को अपनाता है. ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दीज इंस्क्रिप्शंस, एंड द क्रेडिट ऑफ राइटिंग इंस्क्रिप्शंस ऑन अ लार्ज स्केल गोज टू Ashoka. He gave an order. We'll do these things in detail when we'll discuss Ashok in detail. अब आप बोलेंगे कि इंस्क्रिप्शन से कैसे पता चलता है कि कितनी बड़ी एम्पायर थी. उसको इंस्क्रिप्शन अगर इंडिया के अलग अलग कोने से पाई गई और एक ही राजा द्वारा लिखाई गई, तो वो अपने ही किंगडम में तो ऐसा काम करवा सकता है, वो दूसरे राजा के किंगडम में इंस्क्रिप्शंस नहीं लगवा सकता, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री के बाहर है, उसके किंगडम की बाउंड्री के बाहर है. सो उसकी इंस्क्रिप्शंस, अशोक की इंस्क्रिप्शंस देश के अलग अलग कोने में पाई गई. एक अगर कालसी में है देहरादून में, तो एक साउथ में भी है, एक उड़ीसा में भी, इस तरह से पाई गई, जिससे कि ये पता चलता है कि हाउ वास्ट वाज हिज एम्पायर, right? And there are other benefits of studying inscriptions also. So when we'll proceed further in this chapter, we'll be discussing how these texts or the information that we derive from different sources, how it is important to tally them, and then come to conclusion. All these things we'll be discussing, right? So this is how the Ashoka we came to know about King Ashok through inscriptions. Now it helped in gaining a new direction in the early investigation of the Indian political history. इससे पहले political history के बारे में इतना सोचा नहीं गया, क्योंकि हड़प्पा के बारे में जाना गया, तो एक ठीक है, हड़प्पा की जो हम सोसाइटी है उसमें हम पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात नहीं कर पाते, क्योंकि देयर इज़ नो डेफिनेट क्लू अबाउट इट. तो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को पहली बार एक तरह से बूस्ट मिला कि लेट्स मे बी राजा महाराजा यहाँ रूल किए होंगे या किंगडम्स रहे होंगे, तो उस डायरेक्शन में अब काम शुरू हो गया. एंड एक और चीज़ हुई कि इसमें lineages of major dynasties were composed. Now lineage क्या होता है? lineage होता है वंशावली, कि ये राजा था,
ये किस वंश का था, किस डायनेस्टी का था, कि कौन से वंश की शुरुआत की है। फिर वो उसके बाद उसके बेटे ने इसी वंश को आगे बढ़ाया, फिर उसके बेटा ने रूल किया, फिर उसके बाद उसका बेटा। तो दिस इज हाउ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इफ द क्राउन इज ट्रांसफर्ड, दैट बिकम्स अ डायनेस्टी। ठीक है, और उस डायनेस्टी का जो लिनिएज है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड लिनिएज, दैट इज कॉल्ड वंशावली। ठीक है, ये इस वंश का है, इस वंश का राजा है जब हम बोलते हैं तो उसको हम लिनिएज कहते हैं। राइट, सो लिनिएजेस ऑफ डायनेस्टीज वर कंपोज्ड, एक के बाद एक, कौन सा राजा मरा, फिर उसके बाद उसका बेटा बना, उसका नाम क्या था, उसने कितने साल रूल किया, इस तरह से क्रोनोलॉजिकल वाइज जो है वो अब पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने की कोशिश हुई, लिखना शुरू हुए। राइट, it also helped in establishing a context of political history with the social and economic developments in the Indian subcontinent. एक और चीज़ की गई, अब पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो अभी तक हड़प्पा में हम सोशल हिस्ट्री की बात कर रहे थे, सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, उनका इंटरेस्ट कैसा था, अब क्या था, पॉलिटिकल हिस्ट्री के आने से एक कनेक्शन बिटवीन द पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अब राजा की बात हो रही है तो ये हमें पता चल रहा है कि कोई पर्सन अथॉरिटी में था, तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल, हाउ ही वाज रूलिंग, हाउ ही वाज कलेक्टिंग द टैक्सेस, व्हाट वाज हिज सोर्सेस ऑफ इनकम। और टैक्स अगर जनता दे रही है तो कैसी इकोनॉमी रही होगी, कहाँ से दे रही है, क्या, मतलब ऑल दीज एक लिंक्स वर स्टैब्लिश्ड between politics, society and economics of that particular time. Right, so it's an interesting thing. We'll be discussing this. So throughout this chapter we'll be talking about sources, how sources are very important to write the history, and with the help of these sources we'll be trying to discuss this time period and the developments took place during these centuries. Right, so please must watch the upcoming video of mine, and please like, share and review, and do write your comments if you have any doubt on any point, and keep on watching my videos. Thank you.